थिंक यहाँ पे प्लेस क्लोज है. आई एम नॉट श्योर ये क्या बोल रहे हैं. Good morning everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine, and welcome back to yet another ride. So today we are going to Nandi Hills. It is one of the most popular destinations near Bangalore. I heard a lot about it, but to be honest I have never visited Nandi Hills before, and this will be my first time. So I'm joined by my friends. So I will be going to Nandi Hills with my friends here, and today's journey is of around 70 kilometers. So we are expecting a good ride here. So we almost left at around 4:45 in the morning. It's very early, although we had a plan to leave at around 4 o'clock in the morning, but due to some reasons we were unable to do that. And since we gathered at around 4:30 at my friend's house, so we decided to leave at around 4:45. So our estimated time of arrival is at around 6:28 in the morning, as you can see on the map. The map is set. The weather is looking absolutely fine, although there is no rain expected. It was raining heavily yesterday, but I just hope and pray that it will not repeat today. क्योंकि भाई बारिश अगर आएगी तो you know what happens. As a rider, I just hate rain, especially on the rides. So I'm excited for today's journey. So it's around 65 kilometers left for us to cover, and we are still in Jayanagara. We are still crossing this location as of now. And as I said, our estimated time of arrival is at around 6:28 in the morning. We'll try to cover it as early as possible, although we're just aiming for a good ride here. This is a short ride, nothing much to do. It's just 70 kilometers, so I just thought why not we should visit this place, as my friends have already visited Nandi Hills so many times, so I also wanted to see that. So it's a kind of a good opportunity for me to cover that location. And the good thing is I'm vlogging as well, so it's kind of a new experience for me because I heard a lot about it. I just wanted to see some really nice sunrise shoots there. There are a lot of people who go for the photo shoots as well, but I wanted to click a nice time lapse. So let's see if I can get that time lapse, because what I heard about it is the time of sunrise is at around 6 or 6:15 in the morning. So I just wanted to make sure that I get that sunrise, although we are not in a hurry. So we will just try our best to have a really nice ride here. So far so good. So I just refilled my bike before leaving. So the bike is half filled right now. The reason for that is I don't need much of a petrol here because of the mileage of the bike that I'm using right now. It has really good mileage. So since it's a short ride of around 70 kilometers, 70 to 75 kilometers to be precise, so I don't think there's much of a petrol or a fuel that is required at this moment. Although if in case if it requires, then definitely I will have to look for a petrol pump on the way. So the good thing about Nandi Hills that I heard about is, and of course I mean it's a hill station, but apart from that, the kind of weather that you get, the kind of environment that you get, and there are many people who prefer to go to Nandi Hill or any hill station for that matter on preferably on weekends itself. So I mean, as you can understand, there are a lot of people who are working and they hardly get any time to go, so it's a kind of a weekend getaway for many people. So I'm actually excited to see that as well. So currently we are taking Mysore Road. We need to be careful here because of the intersection.
Still there is a signal, but I'm so sorry that we had to leave. Since there is no traffic, I just cleared that signal. Don't get me wrong. We are making sure that we are following all the traffic rules and lanes here. But since it is early in the morning, as you can understand, there is not much of traffic or a crowd, as you can say. So here we have a little bit of a traffic. Well, again, it's the same situation. Not much of a crowd, so I'm just passing this signal. It's around 6 o'clock. I'm so sorry. I'm so sorry. It's around 5 o'clock in the morning right now, as you can see. The good thing is there's not much of a fog here, because sometimes, as you can understand, if you live early in the morning, you will get a lot of fog. So at least it's a very good situation for me to shoot something at this point of time. I'm not sure how's the video quality of this particular camera at this moment, since we are shooting this in low light conditions. So I hope that it works perfectly fine. So we need to take a next right on 200 meters. So indicators are on. So we need to take this right here. I got a little bit confused. Okay, so we are on the route here. So we need to continue on the Palace Road for next 1.4 kilometers. Alright, so we'll be taking this intersection here. This is the underpass. I think there is some construction work is going on, due to which I think this route is closed, so we have to take this underpass. So currently we are maintaining a good speed of around 45 to 50 kilometers per hour. Although we also have a good scope of increasing the speed later as well, as you can understand. So currently we are aiming at around 50 to 55 kilometers per hour. But as you can understand, as soon as we get a good highway, I will just throttle the speed to around 55 to 60 kilometers per hour, as you can understand. Because it deserves that kind of a speed on that particular road. So I'm just hoping to see the same as well. Well, as far as the weather is concerned, it's not too cold as of now. I'm happy for that, because this is my first time I'm vlogging since I'm going on an early morning ride. I didn't got much of a chance in the past as well to vlog an early morning ride, or to go for a breakfast ride as well, for that matter. So this is kind of a breakfast early morning ride for me after a long period of time. So I'm actually excited about it. The good thing is there is not much of a fog, as you can see, and of course there's not much of a traffic as well, as you can understand at this time. So this is the kind of advantage that you get when you go on an early morning ride, or a breakfast ride, as you can say.
always make sure that you're leaving early morning whenever you want to go for a ride. I personally enjoy this kind of rides because there's not much of a traffic you get. The roads are empty, and you can cover as much of a distance as you can based on your targets. So it's absolutely useful to leave early in the morning. Sometimes we do get late for some reasons. I don't know how. Even though if I try to wake up at early in the morning, somehow we kind of get late as well. So there's nothing to worry about. I'm joined by some bikers here, as you can see. I think they are also vlogging. So it's good to see that people around you are vlogging and capturing the moments on their rides. It feels good. क्योंकि पहले क्या है कि मुझे अकेले में vlog करने में मतलब बहुत ज़्यादा awkward लगता था, but again as you spend more time doing the same stuff, you do get better at it, and it kind of becomes a habit as well. So currently we are taking this ITC Windsor underpass right now. So we need to continue on the same road here for the next 700 meters. I think there is a slight deviation from the road that we need to take. अभी ना करते भी इतने सारे झटके आ गए रोड में कि आई लिटरली फील लाइक यार गाड़ी छोड़ के मैं भाग जाऊँ. सीरियसली, आई मीन व्हेनेवर आई गेट दोस potholes, I just lose my mind. I don't know what to say. It always happens with me, and the problem is, it's okay if you are riding alone, but if you have a pillion rider, if you have a pillion behind you, I mean, it just becomes a little bit difficult for the pillion as well. मतलब भाई अभी सिटी के अंदर ऐसे पोटोज मिलेंगे, वो भी सुबह सुबह बिना बारिश के, तो क्या ही बोले बॉस. Okay, so we need to take this right and this U-turn here, I guess. My friend is telling me from behind. So he is kind of Google Maps for me right now. Sorry Google Maps, but I love you. So we need to continue on this route here. So we are taking the Bellary road right now. We are still 1 hour 16 minutes behind from our destination. As you can see, there is one more pothole. Oh god, I don't know when it will end right now. So yeah, as I was talking, we are still 1 hour 15 minutes behind. We need to continue on National Highway 44, which is this highway, for the next 4.5 kilometers, as you can see on the map. Everything is looking good right now. We are currently maintaining a speed of 46 kilometers per hour. Now the only thing that I'm worried about is I need to be extra careful when riding in low light, because it may seem easy in the camera, but definitely it's not. It is definitely not advisable to do anything apart from keeping an eye on the road, especially when you are riding in the night, because no matter how good a rider you are, sometimes shit happens, so we need to be prepared for that shit. So yet another underpass for us on National Highway 44. I just hope and pray that the roads get better from here. So currently we are cruising at around 62 kilometers per hour, which is a very, very good speed here. Especially if it will help you to leave the location as much as possible and as soon as possible,
Alright, it's 5:28 in the morning, and so far we are just 46 kilometers away from Nandi Hills, and we are still 1 hour 5 minutes behind. So I think we have covered a very good distance of somewhere around 30 kilometers. Actually मैंने ये expect नहीं किया था, but as you can see the roads are so good that I can easily manage a speed of around 60 to 65 kilometers, or somewhere around 70 kilometers as well per hour. So it's kind of helping us to cover as much of distance as possible, because as you can understand I don't want to miss the sunrise. यहाँ पे sunrise होता है मुझे दिख जाएगा, but I want to see the sunrise at Nandi Hills, which is very important. So the traffic is kind of building up right now, as this is a busy route, so it is expected. But थोड़ा अभी क्या है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक लग गया, 2-3 बसेस आगे, कार वार अगर ऐसे आगे ना हाईवे में, बॉस, the entire highway will be jammed in few minutes. Although it's a very well maintained road, the lights are awesome, everything is looking good here. There is enough light to ride a bike, to drive a car peacefully on this road. And as you can see, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, we are actually able to see कि ट्रैफिक है, वो हमें दिख नहीं रहा है, but it's a moving traffic, it's a fast moving traffic. So फिलहाल के लिए तो ठीक है, but I'm not sure आगे जाके अगर कहीं हमें रुकना पड़ेगा. So we need to continue on National Highway 44, which is the same highway here, for next 8.9 kilometers. And as per Google Mataji, our estimated time of arrival remains same at around 6:34 in the morning. I mean, it is already a morning, as you can understand, but yeah, that is what the situation is here right now. So currently we are cruising at around 66 kilometers per hour, maintaining a good speed here. 44 kilometers to go. यार जब ऐसे हाईवेज मिलते हैं ना, that is when a biker in you wakes up, no matter what time it is, and you really want to do certain things on your bike, like cruising, and of course while making sure that you are following the lane discipline and maintaining a good speed on the expected highway, but not the other way around. Never do that. It's wrong, it's bad for yourself, it's bad for your safety. No matter which bike you are riding, no matter how good you think you are, always make sure that you are doing what is correct. Don't go with the trend. अभी फिर से आई थिंक इस हाईवे के जो लाइट्स है वो ऑफ है, so we need to match with the headlight itself. Again low light. I always say this in my every video. जब भी मैं ऐसे हाईवेज पे बाइक राइड करता हूँ, it feels like a runway. The roads are like runway and you're the pilot. So make sure that you take off with your bike and enjoy that joy of riding. It's a pleasure. It's a pleasure to ride a bike on this kind of highways. Always it feels good. It gives you mental peace as well. For me, riding is all about making sure that I'm having that mental peace, no matter where I'm going, where I'm heading, whatever the destination is. I always try to enjoy the journey, the process, more than the destination itself. So it always helps me to, stick to my routes. Slight deviation on the lane here. We will be taking a right, and again we will be joining on the left.
So it's approximately 1 hour to go now, which is almost around 40 kilometers. It's not that far. As I said, it's a short ride, a breakfast ride, a morning ride, a early morning ride, whatever you say. I just wanted to have the thrill of going for a ride early in the morning, and just wanted to see how it feels. It feels awesome. It feels fantastic. Everyone should try early morning rides at least once in a week. मतलब स्पीड अगर आप देख पा रहे हो अभी, आई एम एक्चुअली क्रूजिंग एट अराउंड 70 to 69 kilometers per hour, and the good thing about this kind of roads is आप अगर स्लोली भी चलाओगे बाइक तो भी आपकी बाइक 50, 60, 65 किलोमीटर्स पे जाएगी पर आवर. It's just the beauty of the roads, and the bike just complements the same. अगर रोड अच्छे होंगे तो आपकी बाइक जरूर उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी. Alright, it's 5:49 in the morning and we are still 33 kilometers away from our destination. So अभी सिचुएशन ये है कि we stopped for a small break here. I just had some water. थोड़ा सा सुसु करने का ब्रेक भी लेना पड़ा हमें, because as you can understand it's early in the morning and it's little bit cold here. वो देखो वहाँ पे फ्लाइट जा रहा है, so we are getting a good shots here. अभी यहाँ पे थोड़ा टोल नाका आ गया है, तो अपन बाइक वाला लेन ले रहे बॉस. अभी हालत थोड़ी ऐसी मुझे लग रही है कि टाइट होने वाली है. आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, फिर भी मैनेजेबल है, बिकॉज वी विल बी टेकिंग अ ब्रेक शॉर्टली नाउ. सो वी आर लुकिंग फॉर अ नाइस ब्रेकफास्ट स्पॉट हियर. वैसे तो कुछ खाने का मन तो है नहीं मेरा इतने मॉर्निंग में. हार्डली आई विल हैव अ टी हियर एंड मैक्सिमम सम बिस्किट्स, ज़्यादा से ज़्यादा. उसके अलावा मुझे तो लगता भी नहीं है कि कुछ मिलेगा इस टाइम पे हम लोगों को. So there are some good lights on the road here. So there is another flight, as you can see. Flight धड़ाधड़ उड़े जा रहे हैं यहाँ से. And I don't know why this car is coming on the wrong route right now. अभी भाई देखो 4-lane हाईवे पे गाड़ी चलाने का यही मज़ा होता है. There is no restriction. Speed limit is also good. The speed limit on this highway is 50, although we are cruising at around 64 kilometers per hour. थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे, because वैसे देखा जाए तो कोई ट्रैफिक है नहीं. The roads are completely empty and we are just cruising. ऐसा लग रहा है कि मैं पायलट हूँ, रनवे सामने है और मैं गाड़ी उड़ा रहा हूँ. मतलब आई एम लाइक राइडिंग अ बाइक ऑन सच अ कांस्टेंट स्पीड कि एक टाइम पे ऐसा लगता है कि बाइक हवा में उड़ रही है बाबा. तो पूरा पायलट वाला फील आ रहा है मेरे को अभी. as soon as we get any stop here, we will stop for a quick break. ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. I will have a tea. Mostly it will be a tea break itself. We will try to do that as soon as possible. उम्मीद करते हैं कि that stop will come soon, क्योंकि अभी तक तो कोई क्लू मिला नहीं है. And I was expecting, क्योंकि क्या होता है कि 4-lane हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हो, it becomes nearly impossible to find some small shops
और ब्रेकफास्ट स्पॉट्स, बिकॉज देयर इज़ नो स्कोप. कोई स्कोप होता ही नहीं है उन सब शॉप्स के लिए ऐसे रोड्स पे ऑपरेट करना. या फिर once if the road ends, if they are joining some state highway, then we can expect some good breakfast spots here. So we need to take a left here. Alright, so yeah, as I was saying, तो मेरा जो हेलमेट था वो एक्चुअली बंद हो चुका था. माफ़ कीजिए, मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो कट. So yeah, as I was saying, my helmet was completely wet, पूरा गीला हो चुका था. So I couldn't understand what was going around. And बाद में पता चला कि it was because of the dew. थोड़ा dew यहाँ पे ज़्यादा है. It's not foggy actually, but dew जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से you know I'm actually able to see the water droplets on my helmet as well. Although there's nothing on my windscreen as of now. So at least that's a good sign. और जो मेरा कैमरा का लेंस है, I just hope and pray कि कोई fog ना हो and it's able to shoot the video as I am expecting. यार अभी actually I am like feeling much more cold than early in the morning. Oh my god, I think it is because of the trees itself. अभी आप देख सकते हो दोनों साइड में ट्रीज है रोड के, और अभी जो रोड्स है वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं यहाँ से. These are kind of getting narrow. तो अभी हमें थोड़ा ध्यान से भी बाइक यहाँ पे चलाना पड़ेगा. और साथ ही साथ I'm actually feeling cold. I don't know, पता नहीं अभी इस कोल्ड के वजह से कहीं सर्दी ना हो जाए. Although I'm just keeping myself फ्रेश हियर, बट कुछ कह नहीं सकते, कुछ भरोसा नहीं है बॉस. कुछ भी हो सकता है. Okay, enough about the cold here. One good thing is, as you can see, there are a lot of good mountains we are able to see. I think that's the beauty of going on a ride on the hill stations. नज़ारे ही नज़ारे है, हरियाली ही हरियाली है. मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. I don't need to explain at all. आप खुद ही देख सकते हो. Still the roads are good. I'm actually surprised to see this kind of roads on this kind of route. These are just 2-lane roads. It's just a state highway which is just continuing towards the Nandi Hills. So it's actually good to see कि कम से कम रोड तो अच्छे हैं, जिसके वजह से हम किसी भी तरीके की मुश्किल को पार कर सकते हैं. वी कैन ईजीली मैनेज दिस रूट. अगर थोड़ा ट्रक है यहाँ पे, ट्रक के पीछे रहने का कोई मेरा तो प्लान है नहीं बॉस, बिकॉज दिस इज जस्ट टाइम वेस्ट. और यहाँ पे गणपति बापा की इतनी बड़ी मूर्ति है, गणपति बापा मोरया. और क्या ही कहे यार. आई एम फीलिंग रियली गुड नाउ. I don't know, I think it started raining here. अभी मेरे हेलमेट के वाइजर पे थोड़े ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं. I'm not sure it is because of the rain or it is because of this dew that I'm facing here. Okay, so here's a better look of
the mountain peak I was talking about. So yeah, this is a kind of a good shot that we are getting here. यार ऐसी प्लेसेस पे मॉर्निंग में जाके टाइम लैप्सेस बनाने का क्या मज़ा आता होगा यार. आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू सी कि जो नंदी हिल्स का जो मैंने सुना है, जो हिल टॉप है, इट्स लाइक मतलब वहाँ से आपको लिटरली इट बिकम्स इनविजिबल, लिटरली इट बिकम्स सो क्लाउडी कि आपको मतलब कुछ नज़र ही नहीं आता वहाँ से. ऑल यू कैन सी इज द क्लाउड्स इटसेल्फ. सो यू फील लाइक यू आर एक्चुअली अबाउट द क्लाउड, यू नो, व्हेन यू गो टू द हिल टॉप एट द नंदी हिल्स. तो वो मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार. आई रियली वांटेड टू सी एंड आई रियली वांटेड टू कैप्चर सम गुड शॉट्स एज वेल. आई रियली वांट टू टेक सम गुड स्टिल फोटोग्राफ्स एज वेल. So let's see what happens there. But before that, here's a quick update. So we need to continue on this state highway for around 5.7 kilometers. We need to take a next left after that. And as of now, we are just 33 minutes away from our destination. And ETA is at around 6:58. As mentioned earlier, we are just 18 kilometers away right now. So I'm expecting some really good beauty from the nature itself, the holy mother nature. I mean, just look at these roads, man. Trees on both sides of the roads, and ये फार्म देखो. ये मतलब यार ये तो ऐसा हो गया ना, ये मैच मेड इन हेवन वाला काम है. आई डोंट नो व्हाट टू से, बिकॉज अभी इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है यार. आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर कुछ होगा. अभी थोड़ा आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा थोड़ा अभी फॉग बढ़ रहा है. यू नो, यू आर एक्चुअली एबल टू सी दैट वाइटनेस. तो वो मुझे भी थोड़ा अभी लग रहा है धीरे धीरे. सो आई थिंक थोड़ा फॉग अभी बढ़ेगा यहाँ से, थोड़ा ड्यू बढ़ेगा. अभी ट्रीज बढ़ने वाले, रोड्स अभी नैरो होने वाले. अभी पता नहीं कोई घाट रोड लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे. बट आई एम एक्साइटेड टू सी इफ देयर आर एनी रोड्स एज सच which will help us to take some good shots on the way. I hope you guys are enjoying this vlog today, and if you really do, please don't forget to like this video, and if you are new to the channel, please consider subscribing, because it motivates a lot to me to shoot some more such videos in the future as well. बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. Motor vlogging is definitely not easy. In fact, being a YouTuber is not an easy job at all, as you all can understand. बहुत मेहनत लगता है बाबा. Especially if you are a motor vlogger, आपको पता है दुगनी मेहनत लगती है, because you have to take care about anything that comes in your way. You have to take care of your bike, you have to take care of yourself, you have to take care of your route, you have to take care of all your equipments that you are using right now. So it's a kind of a mix and match of everything. So please consider subscribing to my channel if you really like this video. Do share a like, and you can share this video with your biker friends, your loved ones as well. Let them enjoy the beauty of the nature as well. और मैं ऐसे वीडियो तब तक बनाते रहूँगा जब तक मुझ में वो मोटिवेशन रहेगा कि मुझे जाके नेचर को एक्सप्लोर करना है, मेरे कंट्री को एक्सप्लोर करना है. एंड आई जस्ट वांट टू पुट द बेस्ट ऑन द टेबल व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग एंड मेकिंग दिस काइंड ऑफ व्लॉग्स, बिकॉज लुक एट दिस यार, दिस इज टोटल ब्यूटी. द काइंड ऑफ वेदर दैट वी आर गेटिंग राइट नाउ इज पार एक्सेलेंस. आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस. अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला था ना, रोड्स अभी धीरे धीरे छोटे छोटे होते जा रहे हैं. बट द गुड थिंग इज not a single pothole I have seen right now on this road, which is a good thing. रोड्स भले छोटे छोटे होते जा रहे हैं, वेदर थोड़ा ठंडा होते जा रहा है, फॉग थोड़ा आ रहा है, ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, ड्यू बढ़ रहा है, बट आई एम स्टिल एबल टू मैनेज माई राइड. सो आई एम एक्चुअली फीलिंग गुड अबाउट इट. अभी थोड़ा आई थिंक आगे से जो है वो रास्ता ख़राब होने वाला है यहाँ पे. सो वी नीड टू बी केयरफुल हियर. इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली. इतना भी ख़राब नहीं है ये जितना मैंने सोचा था. ठीक ठाक है, ज़्यादा पॉटहोल्स है नहीं. एक्चुअली द गुड थिंग इज ज़्यादा पॉटहोल्स है नहीं यहाँ पे. इट्स जस्ट अबाउट द पेबल्स दैट वी आर गेटिंग ऑन द रूट. बस थोड़े बहुत पत्थर ज़्यादा है यहाँ पे.
but you still need to be careful because you don't want to mess up with your bike tires. You don't want that issue to happen. अरे आप लोग तब तक ये नज़ारे एंजॉय करो, बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय करो, सब कुछ एंजॉय करो. Oh my God, just look at that mountain peak. I don't know if it's a mountain peak or not, but as I can see that, I'm not sure अगर वो कैमरा में क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, but it is looking so good. Oh my God, this is looking so awesome. Wow. अभी जैसे मैंने बोला था, आई एम एक्चुअली फीलिंग सम ड्रॉपलेट्स ऑन माय हेलमेट वाइजर. जो विंडस्क्रीन है मेरे हेलमेट का, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स नॉट अ रेन एक्चुअली. बारिश नहीं आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है ना कि अभी फॉग थोड़ा ज़्यादा है और ड्यू ज़्यादा होने की वजह से ना इट्स काइंड ऑफ गेटिंग कंडेंस्ड राइट नाउ, और वो पूरा का पूरा ड्रॉपलेट बन के हेलमेट पे आ रहा है, हेलमेट को गीला कर रहा है. आई डोंट नो, आई थिंक इट्स द सेम थिंग विद द कैमरा लेंस एज वेल. मुझे लगता है ये सेम चीज़ कैमरा के लेंस के साथ भी हो रहा होगा. थोड़ा बहुत अभी स्पीड ब्रेकर यहाँ पे आ गया था बॉस. So the update is we need to take a left after 950 meters on this route, and we are still 27 minutes behind from our destination, which is at around 14 kilometers from here. The ETA remains unchanged. ETA में कोई अभी तक चेंज हुआ नहीं है, so it's kind of a good thing for us. But just look at this. Look at this. ये आई एम नॉट श्योर अभी ये क्या है, ये माउंटेन पीक है क्या है बॉस, अपने को तो नज़र नहीं आ रहा है, बट आई थिंक देखने से तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये माउंटेन ही है. आई एम नॉट श्योर अगर ये कैमरा में कैप्चर हो रहा है. इफ़ यू कैन सी दैट पार्ट, वो इतना ज़्यादा हाइड आउट हो चुका है फिलहाल फॉग में कि वो नज़र ही नहीं आ रहा है. फॉग के वजह से, ड्यू की वजह से, और ये थोड़ा बहुत आई थिंक रेन भी यहाँ पे जो आ रहा है विच इज़ एक्सपेक्टेड एब्सोल्युटली. तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपको ये कैमरा में देख के इतना अच्छा लग रहा है, तो इमेजिन करोगे कि मुझे गाड़ी चलाते वक्त यहाँ पे कैसा फील हो रहा होगा. एब्सोल्युटली मार्वेलस. क्या बोलो यार, अब वर्ड्स नहीं है मेरे पास भाई. I really don't know how to appreciate the nature's beauty here. I mean, I think it's best that if we just experience the nature as it is. इसलिए मुझे भी मतलब ऐसा कोई ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. इवन ऑन माई प्रीवियस राइड्स, जितने भी राइड्स मैंने अभी तक किए, वेदर आई एम व्लॉगिंग ऑन दोज राइड्स और नॉट, एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है कि आई ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय दिस जर्नी एज मच एज आई कैन. जो भी मुझे रोड्स में मिलते हैं, जो भी नेचर की ब्यूटी मुझे दिखती है यहाँ पे, आई ऑलवेज ट्राई टू अप्रिशिएट दोज थिंग्स इन वन वे और द अदर. सो वी नीड टू टेक अ लेफ्ट from this road here. Okay, so we are taking the left here. यार I hope there are no issues with this place, because last time मैंने सुना था कि I think this place was closed for some time. I don't know, for I think कुछ लैंडस्लाइड हुआ था. मैंने सुना था न्यूज़ में कि नंदी हिल्स में कोई लैंडस्लाइड हुआ था, and it was a very big landslide actually. अनफॉर्चुनेट इवेंट था. आई थिंक ऐसी कोई कैजुअलिटी तो मैंने सुनी नहीं है, बट आई थिंक इट वाज अ प्लेस वेयर यू नो आई थॉट ये कुछ इंजरीज हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो तब से जो था वो पूरा का पूरा नंदी हिल्स बंद था. आई थिंक समवेयर अराउंड 1 month ये क्लोज था, बट आई थिंक अभी जो ये फिर से शुरू कर दिया गया है अथॉरिटीज़ के द्वारा. सो इट्स अ गुड थिंग फॉर बाइकर्स एंड राइडर्स और वीकेंड राइडर्स एज वेल टू एक्सपीरियंस सम ब्यूटी फ्रॉम द नेचर इटसेल्फ.
अभी बॉस ऐसे रोड से गुजरते वक्त जब आपके दोनों ओर ट्रीज ही ट्रीज हो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल रोड यार। मैं तारीफ करते नहीं थक रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। जस्ट लुक एट दिस माउंटेन पिक, जस्ट लुक एट दिस हियर, oh my god. As I was saying, I think it was the same mountain peak that we are able to see from there. So as you can see, this is completely invisible. मतलब दूर से तो possible ही नहीं है। मैं इतने distance पे होके भी I am not able to see that clearly. But as you can see, कितना ज़्यादा fog है वहाँ पे। We are able to see the clouds actually. So ये I think जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो ये कैसे दिखेगा ये आप guess कर सकते हो। Same thing goes here as well. This is absolutely fantastic, man. यार I think this is one of the best mountain peaks यार मैंने अभी तक देखे होंगे यार। I heard a lot about this place and now I know कि लोग नंदी हिल्स के बारे में इतना बात क्यों करते हैं। मैंने बहुत सुना है इस प्लेस के बारे में, but I never got a chance to visit. But now that I'm getting the chance to come here and experience this beauty from the nature, I think I'm just making most of it. दोनों साइड में माउंटेन्स है। हियर ऑल्सो इट्स वन इज ऑन माई राइट साइड एज वेल, एज यू कैन सी, एंड इट्स completely awesome. We are still 11 kilometers short from our destination and it's around 22 minutes from now. We need to take a ride on the next 2 kilometers. अबे भाई यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू रेन फॉर श्योर। बारिश आएगा ही आएगा बॉस। ये इस जगह पे बारिश ना आना इज इम्पॉसिबल यार। जस्ट लुक एट दिस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बारिश नहीं आएगा। ये इतना हिली रीजन पे है, ये इतना हिल टॉप पे है एंड फॉग कह लो, ड्यू कह लो, बारिश कह लो, ड्रिजल कह लो, जो कहना है कह लो बॉस, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप रेन एट दिस प्लेस। much expected and as you can see अभी ये जो ट्रैफिक हमको मिल रहा है, you can understand so many people are going there and coming back. Oh my god, अभी एक्चुअली यहाँ पे रियल ट्रैफिक मिल रहा है यार। अभी हाईवे पे इतना ट्रैफिक नहीं था जितना ट्रैफिक हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो you can understand कि कितने लोग यहाँ पे आए होंगे to experience this place। न जाने कितने बजे निकल के आए, कितने बजे यहाँ पे पहुँचे। सबने सनराइज देखा होगा बट यहाँ पे सनराइज अभी तक हुआ ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम जब से आ रहे हैं यहाँ पे वी आर ओनली एबल टू सी द प्लेस। आई थिंक यहाँ पे प्लेस क्लोज है। आई एम नॉट श्योर ये क्या बोल रहे हैं बट वी नीड टू कंफर्म द सेम हियर। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज क्लोज्ड, समझ में नहीं आ रहा है। We need to see if there is any problem with this place. कुछ समझ में नहीं आया बॉस अभी तक। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ पे हुआ क्या। Why the officers were diverting the traffic on this road? Although map says the same thing here. I mean, as per the map, we are just going fine. I'm not sure कि क्या रीज़न है या क्या इशू है। We'll see that later. But I think अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सही जा रहे हैं। थोड़ा बारिश यहाँ पे लग चुका है अभी। हमको थोड़ा अभी यहाँ पे आराम से चलाना पड़ेगा बाइक बिकॉज अननेसेसरी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत छोटा रोड है ये, बहुत ही ज़्यादा छोटा रोड है। इट्स वेरी नैरो। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है तो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस ऑफ क्रूजिंग माई बाइक एट दिस रोड, क्योंकि भाई पता नहीं कब कौन सामने से आ जाए और ठोक दे बाबा। अपने को वो सब नहीं चाहिए इतनी सुबह सुबह। आई नेवर वांट दैट सिचुएशन। तो
अभी अपने को लेना है राइट यहाँ से, सो वी आर टेकिंग द राइट फ्रॉम हियर। बट मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि वाई दोज ऑफिसर्स वे आर डाइवर्टिंग द ट्रैफिक। आई एम नॉट श्योर कि क्या इशू है। आई थिंक हो सकता है कोई गेट बंद होगा उस साइड से, आई एम नॉट श्योर, मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे। बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है, आई थिंक वो जो गेट होगा कोई एंट्री का उस साइड से, आई थिंक वो बंद होगा, बिकॉज ऑफ विच दे वेर आई थिंक डाइवर्टिंग और स्टॉपिंग पीपल यू नो फ्रॉम गोइंग देयर, ऐसा मुझे लगता है। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी तो आगे जाके ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इफ़ द प्लेस इज़ क्लोज देन नथिंग कैन बी डन, बट आई जस्ट होप एंड प्रे कि प्लेस जो है वो क्लोज ना हो। At least we should be able to go there and experience this place, because अगर इतने दूर आने के बाद अगर प्लेस पता चलता है कि बंद होगा तो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट, जो रोड्स मैंने अभी तक देखे हैं, इट्स 10 on 10, फुल पैसा वसूल। मुझे नहीं पता क्या बोलना है इसके आगे, बट दिस इज जस्ट वंडरफुल। I think it's getting better now, as you can see right now. If you are able to see, it's getting better. Oh my God, just look at this. This is so awesome to look at this beauty. There are people, so many people on the roads who are taking pictures and what not. And why not? Everyone should be taking the pictures on these roads. यार अभी मुझे सीरियसली नहीं पता ये इतने फॉग में मेरा कैमरा शूट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग इनसाइड द कैमरा, कैसा शूट आ रहा है, कैसा सीन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस। बट वॉट एवर इट इज मैन, आई एम एंजॉइंग एट द फुलेस्ट। बहुत मज़ा आ रहा है बॉस। ओके, सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द प्लेस, एज यू कैन सी। मतलब ऐसा लग तो रहा है, बट मैप के हिसाब से ये 9.6 किलोमीटर दिखा रहा है। आई थिंक देयर इज समथिंग that is still yet to come. I'm not sure अभी ये कैसे हम इसको पार करेंगे। I have no idea, we'll see. I think we are already at the place here. यार जस्ट इमेजिन अबाउट द पीपल हु आर स्टेइंग हियर एवरी डे। मतलब आप लोग थोड़ा इमेजिन करके देखो कि इन लोगों की लाइफ जो है वो कितनी पीसफुल होती होगी। आई मीन देखो, मैं कोई कंपैरिजन मतलब ऐसे ड्रॉ करके किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ कि हमारी लाइफ कितनी पेनफुल है या फिर कितनी कॉम्प्लिकेटेड है या कितनी डिफिकल्ट है, एंड इन लोगों की कितनी आसान है। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पीपल हु आर स्टेइंग एट दिस प्लेस एवरी डे। I mean, there is a good farm house. I think, I don't know if it's a farm house, but जो भी अच्छा दिख रहा है ना, as you can understand, जो लोग यहाँ पे रोज रहते हैं, you know, the kind of beauty that they experience on a day-to-day basis is unmatchable, यार. I mean, we cannot even compare these things with them. जो हमारी life है, we cannot compare these things with anyone actually. So it's kind of a, you know, it's kind of a God gift for these people who are you know, close to this place and who are experiencing this on a day-to-day basis. It's always good to know that. अभी देखते हैं वो कहाँ लेके जाता भाई, बहुत ऊपर आ चुके हैं हम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तक तो रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो एज पर द गूगल मैप इफ यू कैन सी वी हैव टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 1.3 kilometers here, which is almost around 27 minutes, 13 kilometers to go. 7:10 is the ETA here, and we're just going good here. अभी ये roads अभी मतलब as you can see it's getting excited. ये इसी से मुझे एक्चुअली जो है थोड़ा डर लगता है, जो डॉग्स है कभी भी बीच में आ जाते हैं, so that I don't want. अभी थोड़ा यहाँ पे मेरे बाइक को क्लाइंब करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। आई विल ट्राई टू पिक इट अप। सो इट्स गेटिंग एक्साइटेड नाउ फ्रॉम हियर फॉर श्योर। अभी धीरे धीरे हम जो है हिल के टुवर्ड्स प्रोसीड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वी आर देयर, ऑलमोस्ट 850 meters to go. Next ride we have to take on 850 meters. अभी पता नहीं क्या गूगल मैप क्या सोच के 27 minutes बता रहा है. I'm not sure. I think it's the same route that we have to follow, but we are already on the hill here, as you can see.
I'm just trying to keep up with my bike here. थोड़ा मैं बाइक को पिकअप देने की कोशिश कर रहा हूँ. As you can understand, my bike is very old, and I just need to make sure that I'm coping up with this situation right now, because it's getting very very exciting here. धीरे 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 अभी हिल बढ़ रहा है यहाँ पे. So let's see what happens. I'm actually excited to see. Okay, as you can understand, अभी रोड जो है वो इतना नैरो हो चुका है कि मतलब अभी मुझे इतना देख देख के गाड़ी चलाना पड़ रहा है यहाँ पे आराम से. आई डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक एट ऑल, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई एम राइडिंग माय बाइक कीपिंग द सेफ्टी इन माइंड. व्हाट ब्रो? वेट वेट. हेलो, बोलो. ओके. अबे वो तो बंद है ना, तो सीधा सीधा. हाँ, तुम लोग अभी तक उधर ही पहुँचे बस. Okay, so as per the map, I don't know, ये अभी भी 25-26 मिनट बता रहा है, but we are on the same route here, and we are just continuing on this road here. We are just continuing on the hill. अभी पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, हिल पे लेके जाएगा कि भी नहीं लेके जाएगा. इट्स ओके यार, अगर नहीं भी लेके जाता है तो क्या प्रॉब्लम है. If it doesn't take us to the hill, it's no problem at all. For us, पैसा वसूल राइडर बॉस. क्या नज़ारे हैं यार. आई मीन इट्स प्योर लव. मैंने एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा है यहाँ पे जिसने अभी तक फ़ोटो नहीं ली हो. वाई नॉट यार, क्यों ना ले फ़ोटो. आप देख सकते हो, ऑल दिस पीपल आर स्टॉपिंग हियर, टेकिंग द पिक्चर्स, एंड एवरीवन इज गोइंग bonkers हियर. तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि कहीं पे भी रुको, सेल्फी लो, एंजॉय करो और घर पे निकलो. Let's see what happens next. I think we have already reached here. वेट कर ले क्या, वो लोग बहुत पीछे. I think we should take a stop here because we are not sure. I think अभी ये कहाँ पे लेके जाएगा रोड हमको. So let's see what happens next. Alright guys, so we are already at the Nandi Hills hill station, as you can see. So क्या हुआ था कि actually last time आपने तो देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले कि some officers were trying to divert the traffic. So actually that was the main gate that I got to know. मुझे ऐसा लगा था कि वो कोई दूसरा entry point होगा, not the main gate, but हमें पता चला है कि that was the main gate, and I think it's closed for now. So what we are trying to do is, I mean, we are just exploring this place here, as you can understand, and this is a village that we are in right now. So हम बस एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पे. We are just trying to take the nearest possible route here, and we are just checking कि how far we can go here. Not sure आगे क्या होगा, हो सकता है रोड बंद हो completely, but we are not sure about this, and we just want to explore कि ये कहाँ तक हमको लेके जाता है, and what is the maximum limit that we can reach here. So yeah, it's kind of a exciting road ahead, as you can see. I need to be careful here, very careful. Okay, so it's going up, up, up and above. अभी धीरे 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 हम ऊपर जा रहे हैं. Okay, so here I can see some cars and bikes. Okay, I think I heard that there is a parking space here. We need to park our bikes and then we can go ahead. I don't know if that is true. अभी क्या है सिचुएशन हमको जाने के बाद ही पता चलेगा. I think this is the place that people are parking here, and
They are just making use of it, I guess. मेरा बाइक नहीं जाएगा बे. Okay, so somehow we have reached here. I don't know if this is the top. Okay, so it says Nandi Hills Ancient Hill Fortress. Welcome. Okay, so I think we have reached here.